Now we start the properties of inverse functions. Number of properties are there. First we discuss about two properties, property 1 and property 2. First we considering the range. Property 1 by considering the range, property 2 by considering the domain. Okay. Sin inverse sin A is equal to x, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Cos inverse cos A is equal to x, tan inverse tan A is equal to x, cot inverse cot x is equal to x, sec inverse sec x is equal to x, cosec inverse cosec x is equal to x. मु फर्स्ट टा प्रूव कर दउची, तमे आरा पांचटा जगह प्रूव कर दो. ओके, सो देखो पहले लेट sin x equal to y. That means x equal to sin inverse y. Okay, left hand side नियो बिले LHS. LHS रे कोन अछि sin inverse sin x, sin inverse sin x. sin ए जारे कोन बिले पुट कर परिबी y. सो केते हिबो देखो बिले sin inverse y. sin inverse y टा केते x. So this is RHS proved. बुझियला मिले से बडे हम नवा कोन डोमेन को नै कि देखिबा sin of sin inverse x equal to x, cos of cos inverse x equal to x, tan of tan inverse x equal to x, cot of cot inverse x equal to x, sec of sec inverse x equal to x, cosec of cosec inverse x equal to x. Same proof. Let sin inverse x equal to y, so imply that x equal to sin y. Okay, left hand side में बोले sin of sin inverse x equal to sin of sin inverse x जब लिख परिबी y, so sin y. Okay, sin y जब लिख परिबी x, so this is RHS proved. Okay, same you can prove the following 5s and these 5s. So this is the property 1 and property 2 for inverse functions. Okay, now we discuss the property 3, that is sin inverse 1 by x equal to cosec inverse x, cos inverse 1 by x equal to sec inverse x, tan inverse 1 by x equal to cot inverse x. Now let sin inverse 1 by x equal to y. So imply that 1 by x equal to sin y. So we can write cosec y equal to x. Cosec y sin y डाइजो कहते 1 by cosec y, 1 by cosec y डाइजो 1 by x by x. So cosec y equal to कहते x. So imply that y equal to cosec inverse x. So imply that y जाना कहते पुट कर sin inverse. So sin inverse 1 by x equal to cosec inverse x. Proved. Okay, you can prove the second and third same. Clear? Now property 4, sin inverse minus x equal to minus sin inverse x, tan inverse minus x equal to minus tan inverse x, cosec inverse minus x equal to minus cosec inverse x. Okay, so prove it here. Let sin inverse minus x equal to y. Okay, so imply that minus x equal to sin y. Clear? So I call it variable. So imply that x equal to minus sin y. How again? Okay, so sin inverse minus x equal to y imply that minus x equal to sin y. So x equal to minus sin y. Okay, so पिला हमें जानी जल्दी कौन ना माइनस sin y टा हम लिख परिया केते पिले sin of minus y
लिखे हो कि नहीं सो इंप्लाइज दैट कौन लिख परिया बोले देखा बोले सो sin इनवर्स x इक्वल टू लिख लेते sin ऑफ माइनस y क्लियर তাহলে আমি লিখ পারি বর্তমান কোন sin ইনভার্স x sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু মাইনাস y ক্লিয়ার সো আমি লিখ পারি বর্তমান কোন দেখো বলে sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু মাইনাস y তাহলে বর্তমান মাইনাস sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু মাইনাস sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু y y টা কেটে দিলে সো মাইনাস sin inverse x equal to sin inverse minus x proved बुझिए लग रहा है बोले देखो sin inverse minus x equal to नहीं दिले y minus x equal to है लगते sin y so x equal to है minus sin y x equal to sin of minus y okay sin लगे पुणे लिए sin inverse x so minus y minus लगे पुणे ले ला minus sin inverse x equal to y so minus sin inverse x equal to sin inverse minus x so ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୁଭ କରି ପାରିବା ଆର ଦିଟାକୁ କ୍ଲିୟର तर ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଦେଖିବା ଆସ ବେଲେ यार ପ୍ରୁଭ କେମିତି କରିବା let cos inverse minus x equal to କେତେ লিখলে y ओके सो ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖ ବେଲେ minus x equal to cos y ओके सो फिर एटा लिख परिबी कोन x equal to minus cos y लिखे हो कि नहीं बिले x equal to minus cos y so imply that x equal to cos of pi minus y cos pi minus y टा बिले कहते कि minus cos y होगी तो लिख कहते x equal to cos of pi minus y so imply that एक पर कहते देखो बिले cos inverse x equal to pi minus y ओके তাহলে বিলে দেখো বিলে মই কোন লিখ পারুছি y minus pi equal to কেতে লিখ পারিবি minus of cos inverse x देखियो कि नहीं cos inverse x एप्रो को माइनस वो साइड रे गेली তাহলে হলো লাগতে y minus pi equal to minus cos inverse x so y equal to बिलेला pi minus cos inverse x so imply that y आर केते लिख पाइबी cos inverse x equal to sorry cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x so this is the property 5 you can prove the second and third also okay by same method now we discuss about property 6 that is sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2 sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2 देखो पहले यार भी इंपोर्टेंस अछि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रे एभलिया क्वेश्चन पढुची शॉर्ट क्वेश्चन जोटा ये फार्मूला अप्लाई करिके हम करिया को पड़िबो ओके सो देखो पहले यार प्रूफ कोन हो हम फर्स्ट प्रूफ कर दउची तमे ले सेकंड थर्ड प्रूफ कर दो मुने लेट sin inverse x equal to y clear so imply that x equal to sin y okay so sin inverse x equal to y हेले x equal to केते जीवो sin y okay मु कोन लेखिन लगा बिले so imply that x equal to sin y टा मु लेख परबी कि बिले cos pi by 2 minus y cos 90 minus theta टा होची sin theta हम जानि जे so लेखली बेटा cos pi by 2 minus y so imply that कोन हो देखो बिले cos inverse x equal to pi by 2 minus y so imply that cos inverse x equal to pi by 2 minus y यार केते लिखिबी sin inverse x ओके तो एपडू लेले sin inverse x टा केते हिजिबो ना sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 proof same as you can prove the second and third clear next आसीबा property 7 को tan लो फार्मूला
tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Condition is if xy less than 1 पहले एटा टिके देखु दुओ कारण याकु नै कि प्रॉब्लम केतना अछि एक्सरसाइज रे. If xy less than 1, tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y by 1 plus xy. If xy greater than minus 1, ମୁଁ पहले फास्ट प्रूव कर दउची तमे सेकंड टा निजे प्रूव कर दबो. ओके ମୁଁ नेली कोन देखाबिले let tan inverse x equal to alpha and tan inverse y equal to beta. So you can write x equal to tan alpha and y equal to tan beta. Clear? So ଆମେ କଣ ଲେଖି ପାରିବା let मुनेली कौन दिले tan alpha plus beta. फॉर्मूला कौन ना tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta. Clear? So बर्तन में कौन लिख पाइबे देखबिले tan alpha plus beta equal to tan alpha जगह में केते लिख पाइबे x, tan beta जगह लिख पाइबे y by 1 minus xy. So finally alpha plus beta equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. So imply that alpha जगह में केते लिख पाइबे tan inverse x. So tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Proved. Same as you can prove the second, that is tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y by 1 plus xy. Okay. Now we discuss about property 8, that is 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. 2 tan inverse x equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. मु फर्स्ट टा प्रूव कर दोची तमे सेकंड और थर्ड टा प्रूव करियो. ओके देखो बेले let tan inverse x equal to theta. So x equal to कोन बेले tan theta. ओके RHS नियो बेले RHS रे कोन देइची ना sin inverse 2x by 1 plus x square. So implies equal to sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta. So equal to पहले ये एटा कार फार्मूला sin 2 theta फार्मूला. So वर्तमान को लिख दे करिया देखो sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta equal to लिख दे करिया कौन sin 2 theta. So sin inverse sin 2 theta. So sin inverse sin कटी वाले मिला करते 2 theta. So equal to 2 theta जगह में कितने लिख पारी tan inverse x. So tan inverse x. This is LHS proved. Okay. सेवा तो एठी कोन करि परिबा थिले सेम जिंस नबो RHS ए tan inverse x equal to theta नबो x equal to tan theta नबो. So RHS नबो cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. x जगह रे पुट कर दो tan theta और एटा यो 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. This is the formula of cos 2 theta. Cos inverse cos कटि जीव रहबो 2 theta. 2 theta equal to 2 tan inverse x. एक जगह एठी विषय करिवो tan inverse 2 tan theta by 1 minus tan square theta. एटा होची tan 2 theta ର formula. tan inverse tan कटि जीव रहबो 2 theta. This is known as 2 tan inverse x. Clear? तो आगे तापर प्रॉपर्टी 9 को 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x into 1 minus x square. मु कोन करे देखबिले let sin inverse x equal to नै कोन बिले theta. So implies that कोन लिख पारेगी x equal to or sin theta equal to x. लिख पारेगी नहीं. So also implies that cos theta equal to 1 minus x square square root. Clear? तो बर्तन मु कोन लगी देखबिले sin 2 theta
sin 2 theta equal to लिखिए 2 sin theta into cos theta. So imply that sin 2 theta equal to 2 sin theta का लिखिए कहते बोले x cos theta का लिखिए कहते 1 minus x square. Okay, so imply that 2 theta equal to sin inverse 2x 1 minus x square. Clear? So 2 theta का लिख पारिबी sin inverse x 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x 1 minus x square. Proved. बुझियला मिले सेबला हम नवा काकू 2 cos inverse x रे कोन लिखि लेखो let cos inverse x equal to theta. So imply that x equal to केते cos theta. So मु कोन लिख परिबो देखो बिले so cos 2 theta equal to हमें जानि जे कोन 2 cos square theta minus 1. Clear? So वर्तन में डाले लिख केते cos 2 theta equal to cos square theta का हम लिख परिबे x. So 2x square minus 1. So 2 theta equal to केते लिखिया हो गेले cos inverse 2x square minus 1. So 2 theta का हम लिख परिबे केते cos inverse x 2 cos inverse x equal to cos inverse 2x square minus 1. Proved. So this is the property 10 about 2 cos inverse x, property 9 about 2 sin inverse x, property 8 about 2 tan inverse x in form of sin inverse, in form of cos inverse and form of tan inverse also. Clear? Now we discuss about property 11 and property 12. Property 11 is 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube. मुप्रूव करते देखो बिले let sin inverse x equal to theta. So imply that x equal to sin theta. Okay, so now sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin q theta. Okay, so imply that sin 3 theta equal to 3 sin theta का हम लिख पाएंगे x minus 4x cube. So 3 theta equal to sin inverse 3x minus 4x cube. So 3 theta का हम लिख पाएंगे sin inverse x. So 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube. Proved. Clear? Same as 3 cos inverse x. Let cos inverse x equal to theta. So x equal to cos theta. Okay. If you consider cos 3 theta, that is 4 cos q theta minus 3 cos theta. So imply that cos 3 theta equal to 4 cos q theta like maybe x cube minus 3x. So 3 theta equal to cos inverse 4x cube minus 3x. So 3 theta like maybe cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Proved. Clear? This is about 3 sin inverse x and 3 cos inverse x. Clear? Now we discuss about property 13, that is sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse x into 1 minus y square root plus y into 1 minus x square root. Second one is sin inverse x minus sin inverse y equal to sin inverse x into 1 minus y square root minus y into 1 minus x square root.
Clear? Third one is cos inverse x plus cos inverse y equal to cos inverse xy minus square root of 1 minus x square into 1 minus y square. Cos inverse x minus cos inverse y equal to cos inverse xy plus square root of 1 minus x square into 1 minus y square. ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ପ୍ରୁଭ କରି ଦଉଛି ଆଉ ତିନିଟା ତମେ ପ୍ରୁଭ କରିବ. କ୍ଲିୟର? ଦେଖ ବିଲେ let sin inverse x equal to alpha and sin inverse y equal to beta. So imply that x equal to sin alpha and y equal to sin beta. Clear? Now we taking sin alpha plus beta equal to हम लिख परिवा केते फार्मूला रे sin alpha into cos beta plus cos alpha into sin beta. Clear? So imply that sin alpha plus beta equal to sin alpha यार हम लिख परिवा केते बोले x एटा को बोले x जे दिला sin alpha. So cos alpha केते हबो ना cos alpha हबो square root of 1 minus x square same as cos beta हबो 1 minus y square रो square root. Clear? कन्वर्ट में लिखिबा sin alpha plus beta equal to केते sin alpha जगह में लिख लिए x cos beta जगह में लिख लिए केते 1 minus y square. Clear? plus cos alpha जगह में केते लिखिबी cos alpha जगह लिखिबी 1 minus x square रो square root into sin beta जगह लिखिबी y. Clear? So alpha plus beta equal to केते हबो sin inverse x into 1 minus y square plus y into 1 minus x square. Clear? alpha जगह केते लिख परिबिले sin inverse x plus beta जगह केते लिख परिबी sin inverse y. So equal to केते हबो sin inverse x 1 minus y square plus y into 1 minus x square. Clear? This is proved. Okay. So this is the sin inverse x plus sin inverse y. Exactly it is एमिति सेमिति करिया sin inverse x minus sin inverse y by नै जिवो केते sin alpha minus beta cos inverse x plus cos inverse y by नै जिवो cos alpha plus beta cos inverse x minus cos inverse y by नै जिवो cos alpha minus beta. Clear? एमिति प्रूव करिया पड़िबो. Now we discuss about property 14, that is 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Okay, so now देखिए पहले let tan inverse x equal to theta. So x equal to tan theta. We consider tan 3 theta equal to 3 tan theta minus tan q theta whole divided by 1 minus 3 tan square theta. So imply that tan 3 theta equal to tan theta में x लिख परिबा. So 3x minus x cube whole divided by 1 minus 3x square. So 3 theta equal to tan inverse 3x minus x cube whole divided by 1 minus 3x square. So theta हम केते लिख परिबा बिले tan inverse x through 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square. Okay, proved. Clear? Now we goes to property 15, that is tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to tan inverse x plus y plus z minus xyz whole divided by 1 minus xy minus yz minus zx. Okay, so लिखियो अगले let tan inverse x equal to alpha, tan inverse y equal to beta, tan inverse z equal to gamma.
So imply that x equal to tan alpha, y equal to tan beta, and z equal to tan gamma. Okay, now we goes to the formula tan x plus y plus z, that is tan x plus tan y plus tan z minus tan x tan y tan z whole divided by 1 minus tan x into tan y minus tan y into tan z minus tan x into tan z. Clear? So imply that tan x plus y plus z, so immediately we will direct x plus y plus z equal to tan inverse प्लेबे एमन जारे पुट कर दो एमन कर वैल्यू tan आई जारे केते लिख परिबा tan आई जारे लिख परिबा केते ले सॉरी बिले हम एटी भूल लिख दबा अल्फा. ओके, अल्फा बीटा गामा. ओके, एटी फार्मूला चेंज हो कोन tan अल्फा tan बीटा tan गामा. एटी एजिवो tan अल्फा tan बीटा tan गामा. एटी एजिवो tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan अल्फा tan गामा. ओके, सो वर्तमान एटी कोन एजिवो देखलो मिले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा जारा लिख परिबा x plus y plus z minus xyz whole divided by 1 minus xy minus yz minus zx. Okay, so alpha जागर भी हम कॉल लिख परिबी tan inverse x, so tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to tan inverse x plus y plus z minus xyz whole divided by 1 minus xy minus yz minus zx. This is proved. Okay, this is the property 14 and 15 about tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. Okay, now we discuss about property 15 sin inverse x. Below this property is very important. sin inverse x जदि थिबो आमे sin inverse x को अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स रे कन्वर्ट करिया. sin inverse x ता cos पर माने कोन होबो cos inverse 1 minus x square, tan inverse रे होबो tan inverse x by 1 minus x square, cot inverse रे होबो 1 minus x square by x, sec inverse रे होबो 1 by 1 minus x square रोट होबो, cosec inverse रे होबो cosec inverse 1 by x. पिले एला जानले हम कोन होबो प्रॉब्लम करिया सहज होबो. दिस प्रॉपर्टी इज very important property. एभलिया तीनटा अछि हम sin inverse x रो नै करिबा, cos inverse x को नै कि अदर 5 रे कन्वर्ट करिबा, tan inverse x को नै कि अदर 5 रे कन्वर्ट करिबा. ओके, देखो बिले एटा फाटा लिखि करिबा मूल्य लिखले कोन देखो let sin inverse x equal to theta. So x equal to कोन लिख परिबी बिले sin theta. ओके, तले वर्तमान कोन कहि परिबी देखो बिले cos theta equal to कोन लिख परिबी cos theta equal to 1 minus sin square theta. Okay, so imply that cos theta equal to 1 minus x square. Okay, so imply that theta equal to cos theta equal to 1 minus sin square theta root over. So 1 minus x square root over, so theta equal to cos inverse 1 minus x square. ओके, रूट ओवर देखो पहले हमको प्रूव करते हैं थीटा इक्वल टू कहते sin इनवर्स x. तार बाद हम लिख दे भाई कोन sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर. फर्स्ट प्रूफ हे गला मिले. सेकंड को जीवा tan थीटा. सो सेकंड रहला tan थीटा इक्वल हम कोन जानते मिले tan थीटा इटाला फर्स्ट प्रूफ आई. सेकंड को अछि tan theta equal to हम कितने जानते मिले sin theta by cos theta, sin theta by cos theta. So imply that
tan थीटा इक्वल टू sin थीटा केते बिले x cos थीटा केते 1 minus x square root over 1 minus x square root over, so imply that theta equal to tan inverse x by 1 minus x square root over, so imply that theta हम केते लिख परिबा sin inverse x, so sin inverse x equal to x by 1 minus x square root over, clear. सेकंड प्रूफ हे गला. थर्ड प्रूफ আছে बिले थर्ड रे हम कोन जानि छे cos थीटा इक्वल हम जानि छे कोन cos थीटा by sin थीटा, so imply that cos थीटा equal to cos थीटा द्वारा हम केते लिख परिबा 1 minus x square by x, so imply that theta equal to cot inverse 1 minus x square by x, so sin inverse x equal to 1 minus sin inverse x equal to tan inverse लिखो. ओके tan inverse. ओके तो એટલે કે sin inverse x equal to cot inverse 1 minus x square by x. कंप्लीट. कागला से गोडी बिले sec फॉर्म को हमें जानते कोन बिले sec थीटा इक्वल टू 1 by cos थीटा. ओके so imply that sec theta equal to 1 by cos theta हम केते लिख परिया बिले 1 minus x square root over, so imply that theta equal to sec inverse 1 by 1 minus x square root over, so theta जागर हम केते लिख परिबा थीटा जागर हम लिख परिबा sin inverse x equal to sec inverse 1 by 1 minus x square root over. ओके काम रहा है गोडी बिले cosec थीटा इक्वल टू हम जानि जेनी कोन 1 by sin थीटा, so cosec थीटा इक्वल टू 1 by sin थीटा जेला x, so थीटा इक्वल टू cosec inverse 1 by x, so theta equal to, so imply that sin inverse x equal to cosec inverse 1 by x. complete. so एटा हला कोन बिले sin inverse x रा ए फॉर्मेट में एमदी प्रूव करिवा sin inverse x रे. तो नेक्स्ट रे हम देखिबा कोन बिले cos inverse x रो. ओके नाउ सेम आज प्रॉपर्टी 15a जेमे हम sin inverse x को कन्वर्ट करथिले सबुतिरे अदर 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ले सेबा cos inverse x को भी हम कन्वर्ट कर दे परिबा बोलिए sin inverse 1 minus x square tan inverse 1 minus x square root over by x, cot inverse x by 1 minus x square root over, sec inverse 1 by x, cosec inverse 1 by 1 minus x square root over. केमिति करिया बिले ना हम धरनवा cos inverse x को थीटा धरनवा x equal to cos theta, so sin theta equal to केते 1 minus cos square theta root over, so 1 minus x square root over. Same, very important also, just like property 15a, b and c also important. You can convert such as by a tan inverse x also sin inverse x by 1 plus x square एको प्रूव करते परयो केमिति tan inverse x को धरना होगेते थीटा धरना हो x equal to tan थीटा तो कोन करिवो ना फार्मूला पके दबो sec square थीटा equal to 1 plus tan square थीटा सो केते आइ दिबो ना देखो बिलम कर दउ जेटा सीधा कर दउ जो के let tan inverse x equal to theta, so x equal to केते दिबो tan थीटा. सो हमें जानि जे कोन बिले sec square थीटा sec थीटा इक्वल टू हमें जानि जे केते sec थीटा इक्वल टू 1 plus tan square थीटा root over, so imply that sec थीटा इक्वल टू केते हिजो 1 plus x square root over, so थीटा इक्वल टू केते हिजो sec inverse 1 by sec inverse 1 plus x square root over. ओके एटा जे थीटा हे गला तार वर्तमान tan इनवर्स x इक्वल टू एती प्रूफ हे गला. क्लियर. तो sec इनवर्स एती हे गला cos इनवर्स एटा केते जो 1 by 1 plus x स्क्वायर तापर तुम कोन पुट कर दबो सेटा थीटा हम नै की कन्वर्ट कर दबो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रे कन्वर्ट कर दबो कोडी cos थीटा को बा sin थीटा cos थीटा फॉर्मेट रे आसीबो समझते एबे सब जाको रेशियो रे हमें डिराइव कर देई परिबा एटा तमे निजे करिवो. ओके सो these are the properties of the triangle, properties of the inverse function. क्लियर. देखो बोले नंबर 3 आई और नंबर 3 रो vi कर दोछि. ओके सो देखो फास्ट देखि आईटा सॉल्व करिवा सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्ट करिवा. देखो बोले देखि कोन sin
2 sin inverse 0.6 सो आमे जानि जे बिले 2 sin inverse x रो फार्मूला कोन ना sin inverse 2 into x into 1 minus x square 1 minus x square okay so sin inverse cancel रहिला केते देखो बोले 2 into 0.6 टा बोले दे पारे 6/10 into root over of 1 minus 36/100 okay so 2 into 6/10 into root over हे गले केते जीवो 100 minus 36/100 so 2 10 का गला 5 so 6/5 into एटा जो केते बिले 100 minus 36 by 64 root over 8 so 8/10 okay so वर्तन कहते हैं जो देखो बिले 6/5 into एटा जो कहते 4/5 so this is 24/25 सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन करिबा vi so vi रे कोन अछि देखो बिले cosec cos inverse 3/5 plus cos inverse 4/5 so वर्तमान मु बिले कोन करूची cos inverse को मु sin inverse को कन्वर्ट कर देबी केते हिजो देखलो बिले sin inverse 1 minus x square then एटा हिजो 9/25 plus sin inverse 1 minus 16/25 so केते रहला देखो बिले cosec sin inverse 25 minus 16 माने केते हिजो 4/5 plus sin inverse एटा जो कहते 25 minus 16 ने 3 है 9 है जो 9 ने 3/5 सो वर्तमान sin inverse x plus sin inverse y रो फार्मूला पके दवा केता हो देखा बिले sin into cosec sin inverse 4/5 into 1 minus 9/25 plus 3/5 into 1 minus 16/25 so वर्तमान केते रहला देखा बिले so cosec sin inverse एटा केते जो देखा बिले 4/5 into 25 minus 9 है जो केते 16/25 एटा हो केते 4/5 plus 3/5 into 3/5 so केते रहला देखो बिले cosec into sin inverse 16/25 plus 9/25 so cosec into sin inverse 25 LCM so 16 plus 9 so केते हिजो cosec into sin inverse 1 sin inverse 1 दा केते बिले pi/2 so cosec pi/2 that is 1 clear